प्यास बसे कर्मों से दूर, कमल बारी महिला से बारी माही जूर, कमल बारी महिला से बारी माही जूर। आतम महबूब यार आतम महबूब, आतम महबूब यार आतम महबूब। देखा हमने निहार और कुछ ना खूब, देखा हमने निहार और कुछ ना खूब। सुखी दुखी होत नाही सुख दुख के माही, सुखी दुखी होत नाही सुख दुख के माही। दर्पण में धूप छाही घाम शीत नाही, दर्पण में धूप छाही घाम शीत नाही। आतम महबूब यार आतम महबूब, आतम महबूब यार आतम महबूब। देखा हमने निहार और कुछ ना खूब, देखा हमने निहार और कुछ ना खूब। जग के व्यवहार रूप जग सो निर्लेप, जग के व्यवहार रूप जग सो निर्लेप। अंबर में गोद धरियो व्योम को न चेप, अंबर में गोद धरियो व्योम को न चेप। आतम महबूब यार आतम महबूब, आतम महबूब यार आतम महबूब। देखा हमने निहार और कुछ ना खूब, देखा हमने निहार और कुछ ना खूब। भजन में नीर भरियो थिर में मुख पेक, भजन में नीर भरियो थिर में मुख पेक। घानत मन के विकार तार आप देख, घानत मन के विकार तार आप देख। आतम महबूब यार आतम महबूब, आतम महबूब यार आतम महबूब। देखा हमने निहार और कुछ ना खूब, देखा हमने निहार और कुछ ना खूब। आतम महबूब यार आतम महबूब, आतम महबूब यार आतम महबूब। देखा हमने निहार और कुछ ना खूब, देखा हमने निहार और कुछ ना खूब। जय जिन मुक्ति जी, स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करना है जी। सर्वप्रथम हम मंगलाचरण करेंगे। जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है, समभाव समता भाव जिनका
जगत में विख्यात है। जिसने बताया जगत को, प्रत्येक कण स्वाधीन है। करता न हरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा, हो शांति सारे देश में। है देश ना सर्वोदय, महावीर के संदेश में। नमो जिनाणम। जय जिनेन्द्र। शुद्धात्म वंदन। As we all know that a colossal calamity has taken over humankind. The world rattles with turbulence, echoes with chaos. Amidst all this, we are fortunate to have gathered here under the same roof, on the same platform, inspired by a same motive, in the quest of tranquility, inspired by the thought to go out the better from facing this. इसी से प्रेरित होके एक ऐसी महामारी को दूर करने के लिए, जिसको हम अनादिकाल से झेलते आ रहे हैं, एक ऐसे वायरस को बीट करने के लिए जो हमें अनंत काल से परेशान कर रहा है, ऐसे शरणार्थियों को शरण देने के लिए तीर्थधाम मंगलायतन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है पवयन भक्ति सेलिब्रेटिंग द सोल टॉक्स। आज मैं मुक्ति जैन आपकी इस सेशन की होस्ट हूं और इस सेशन का नाम है द वॉइड। Now, I want you to think over a few things. What enables us to claim the same throne as that of Bhagwan? Why is it justified for us to be called Siddhon ke Laghunandan? What permits us to sit alongside our ideals? What brings us to a common ground? हम में समानताएं हैं. We have similarities. Okay, now have a look at this. Why do you think people are running campaigns, holding banners, saying Black Lives Matter? Why? Because somewhere they believe that blacks and whites are equal and both deserve to be treated equally. कि सबको समानता का अधिकार है. अब इसको देखिए, आप सपोज कुछ एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते, आप कुछ आपका राइट नहीं करते, जैसे यू हैव राइट टू वोट बट यू डोंट वोट, दैट्स योर पर्सनल चॉइस. नाउ व्हाट हैपेंस? गवर्नमेंट स्नैचेस अवे दैट राइट फ्रॉम यू. व्हाट विल यू अंडरगो? व्हाई? It wasn't benefiting you anyway, you weren't voting anyway, then why does it matter now? Because it's not about vote, it's about right to vote. बात अधिकार की है, बात समानता की है. यदि हम जैन दर्शन के सिद्धांतों पर दृष्टिपात करते हैं, वस्तु व्यवस्था पर दृष्टिपात करते हैं, तो हम पाते हैं कि जैन दर्शन नॉट ओनली प्रोक्लेम्स इक्वालिटी बिटवीन टू सोल्स but also establishes a kinship between different substances of the world. जैन धर्म ने साधर्मी वात्सल्य का इतना बड़ा हाथ आगे बढ़ाया है कि श्वेतांबर और दिगंबर की तो छोड़ो ही, और मुस्लिम जैन आदि ये सब भेदभाव तो छोड़ो ही, लेकिन अन्य द्रव्यों को भी साधर्मी कहा है. वो कैसे? सी, दे एग्जिस्ट, वी डू टू, दे चेंज, वी डू टू. ये समानता है, जिसमें समान धर्म पाए जाएं, वही तो साधर्मी है. और यहाँ ये भी फायदा है कि यहाँ तो हमें अपने राइट्स के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई कैंपेन्स और इस सब की जरूरत नहीं है. हमें बस पता करना है, वी जस्ट हैव टू एक्नॉलेज दैट दे एग्जिस्ट और देयर आर लार्स. सीक एंड द नेचर शैल रिवील. So to focus more on the same and Char Abhav, I would like to call on a very proficient speaker and and our former Manglarthi, who is currently CA and MBA and also an investment bank in Bangalore, Manglarthi Gyayak bhaiya, to come and
speak. Jai Jinendra, everyone. I hope I am audible. So let's start with Manglacharan. Namo Arihantadam, Namo Siddhadam, Namo Ayariyadam, Namo Vajjayanam, Namo Loe Savasahunam. In this the sessions of soul talks which we are having, uh, we are starting getting into our third session, and the third session is called the void. What is that void? Which is, or do we feel that there is some void between in ourselves, and how can, what can we do to basically take care of that void? So before we start the session, I want to basically have a small poll. So Adham, can we have a poll? I just want to understand, what do we believe? Is the poll available? So on your screen, there is a poll. Are you worried about your future? Okay. Yes, no, sometimes. Okay. I want you to basically start with this. Okay. And see if we can do something about it. If we can do something to basically mitigate the worriness. Okay. Okay. More people. We'll wait for 10 more seconds. Okay, so the results are here. 50% of us believe that we are worried. Are we worried about our future? 50% of people believe that we are worried about future. Okay, now in this session, what we are going to see, that worriness, what we have about future, is it worth it or not worth it? Okay. From language perspective, I will be switching on and off between English and Hindi. If there is something which you are not able to understand, you can raise hand or put in a comment section. Questions and answers we will take after the session gets over. Okay, so let's begin with our session. Here we are. Okay. Just a second. Session 3, the void. Okay, I hope you are able to see my screen. So this is what I have shown in this slide, is basically the circle of our life. Okay, we work. Okay, we work for our family, we work for ourselves, we work for money, and then there are some our wants. Okay, which we want, something which we want from our life out of this. Okay, out of all the hard work we put day in and day out, there is something we want from our lives. Okay, and in this and circle of life, at the end of the day, when we sit peacefully, we realize that we have lost freedom. Okay, whatever we want to do, we always cannot do the way we want it to do. Okay, and we find ourselves constantly living either in the past or in the future, right? Worrying about what has happened in the past. Okay, the events which had unfolded, how, why they have unfolded the way they were. Okay, or thinking about the future, basically what there lies in future for us. Okay, and then we are unsatisfied with the results, and this creates a void between us, right? Whenever we start any spiritual discussion, right, even with our colleagues in our office, or with people in our family or in our religious circles, whenever we start with a discussion on spirituality, always the first thing which comes to our mind is, who are we? What are we doing here? And are we happy? Okay. And these are basically some of the important questions which, we want spirituality to come out with for ourselves. Okay, so in our session, basically what we are trying to do is we are trying to answer these three questions. Okay,
whether we have really lost our freedom, or if we have, then how to get it back. And then we will end up knowing that is there really a need to worry about our future or not. Okay, so in the session 1, what we have understood is that the world is full with anityata. Okay, and between that anityata, between the temporariness, there lies the permanence, which is we, our atma, our soul. Okay, and in the second session, what we understood is that there is something called dravya gun paryay, substance, their attributes, their characteristics, and the paryay, which is the outer form, which changes constantly. Okay, now all these substances, they have something called samanya gun, and how the samanya gun basically helps us realize our lost freedom is what we are going to understand. So without getting much delayed with this, we come on our main topic, Astitva Gun. So these are the 6 Samanya Gun, right? Astitva, Vastutva, Dravyatva, Prameyatva, Aguru Lagutva, and Pradeshatva. It is not important whether you learn their names. If you know it, it's very good. If you do not know it, doesn't matter. What is important today is to understand how these samanya gun, common gun, that means all these attributes. Gun means attributes, characteristics, features, or qualities. All these characteristics, they are present with all the substances, all the dravya. And what we understood in second session, we are jeev dravya. Okay, it is so we are jeev dravya. Then there is our body. Okay, this body, this is a pudgal dravya. Okay, all these jeev pudgal dravya, they have all these gun, all these qualities in our common, and how these qualities lead us to the freedom, lead us to the lost independence, lead us to basically the land where there is no worry. Okay, that we are going to understand from our session. So let's come to Samanya Gun number 1, Astitva Gun. Okay, what Astitva Gun tells us, as the name suggests, Astitva. Astitva means presence. Okay, so Astitva Gun tells us that जिस शक्ति के कारण द्रव्य, द्रव्य यानी मैं, मेरा कभी नाश नहीं होता और मैं किसी से उत्पन्न भी नहीं होता, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं. So basically अस्तित्व गुण ensures that neither we die, and if we do not die, then there is no question of taking birth again, right? So then you will, that what happens, we have seen people dying, we have seen people taking birth, and you are saying that there is something called astitva gun because of which nobody dies and nobody takes birth. Then why is that? So understand this, our soul, which is nitya, okay, our soul never dies, and this pudgal also never dies, it just changes its form. Okay, let me take a very simple example. There are trees. Okay, somebody cut the tree, make it a plywood, then somebody take that plywood, make it a furniture, then somebody put fire on that furniture, so the furniture basically will become ash, or maybe become smoke. Okay, so what is happening with that tree, that pudgal, that has changed its form. Okay, from tree it became wood, from wood it became furniture, and then from furniture it became ash. That what has happened to that pudgal? That pudgal is still there, but it has changed its form. Okay, now let's take another example. From where Ganga originates, river Ganga originates from Himalayas. Okay, from Himalayas it originates, and in Bay of Bengal, okay, it mixes with the Indian Ocean. It mixes with Bay of Bengal. Okay, so the Ganga, which is there in Himalayas, and then it is then coming out of plains and then going to the ocean, is that the same Ganga? Okay, the Ganga which is there in Haridwar, the Ganga which is there in Kashi, the Ganga which is there in Patna, is it the same river? Okay, you will call it by the same river. Does it has the same qualities? Sometimes the water is dirty, sometimes the water is clean, but it still has some
characteristics, right? And then the paryay changes. You will call it that the river that is in Kashi is different from the river which was in Haridwar. Okay, so the river remains the same. It changes its forms, and when it passes through various cities, and then it mixes with the ocean. Okay, and if even in the ocean, the water which of Ganga remains the same, right? So, what are the benefits of knowing this Astitva Gun? The benefits of knowing Astitva Gun is it will basically, all our fear will go away. How that fear will go away? When we realize that we never die. Okay, then will we have fear of death? Will we have fear of any pain? Will we have fear of this life? Will we have fear of another life? All such fears will go away. Then another, which is very important benefit of knowing Astitva Gun, is that we will realize that there is no one who has created this world. Okay, what we believe is there is some God who has created this world. There is some God who destroys the world. There is some God who takes care of this world. But when we understand the Astitva Gun, we will realize that no one has created this world. No one can create this world. Why? Because this world is Anadi Anant. Okay, no one has created this world, because all the substances, they are Anadi Nidan. They have Astitva Gun. So because of Astitva Gun, no one can die and no one can take birth. And then third important benefit is that we will realize ourselves that we are also not the doer. Okay, we also cannot create or destroy or maintain anything. This is an automatic procedure. So the automatic procedure, whatever happens at the time when it should happen, and give the results which were already decided because of our purva karma. So that will happen automatic process. Now you will ask that I created breakfast in the morning, I ate that breakfast, and you are saying that we are not doer. Then who is the doer? Who has done that? So getting deep into it, you will realize that all the ingredients were present. Okay, the spice was present, the fire was present, and then at that point of time when it should have happened, it happened because of its yogyata. What will happen if we are incapacitated? We cannot go get into the kitchen, we cannot cook, our legs are broken or our hand is broken, then would we still have gone and made that breakfast? No. So basically what has happened happens due to its own yogyata. When it should have happened, it will happen, right? So this is what Astitva Gun tells us. Okay, moving forward to the next, Vastutva Gun. What Vastutva Gun tells us is, Vastutva Gun tells us that जिस शक्ति के कारण द्रव्य अपना प्रयोजन भूत कार्य करता है. What is the meaning of prayojan bhut? That means a Vastutva Gun ensures that we are occupied with the predefined task. The task is already allocated to us and we are only going to do that task. And what is that task? That task is within the limits of our swabhav, within the limits of our nature. So basically we cannot do anything which is beyond our nature. Okay, coming, who are we? We are Jeev Dravya. Okay, and what are the characteristics of Jeev Dravya? The characteristics of Jeev Dravya are Gyan, Darshan, Chetna, Sukh Dukh ka Anubhav karna. Okay, these are all the attributes of Jeev Dravya. So since we are Jeev Dravya, this is the Prayojan Bhut, this is the predefined task, what we are capable of doing. What we are not capable of doing, we are not capable of doing, which is not our swabhav. Okay, so basically driving a car. Okay, I drive my car. Okay, so this is the task which has happened. Okay, now who has done this task? Is the Jeev has done this task or the Pudgal has done this task? Right? So if what has Jeev done in the process of driving the car? What Jeev has done is basically he is a knower. Okay, he knows that the car has driven, he has experienced it.
But who has driven the car? The car was driven by its own yogyata. Okay, if Jeev would be there to drive, if you are there to drive the car, but there is no petrol, there is no gas in the car, then what will happen? There are no tires in the car, then what will happen? There is no road, then what will happen? Okay, so these are all constraints which are limited to Pudgal. Okay, what we see outside, these are all Pudgals. Okay, again, coming back, what are the benefits of Vastutva Gun? So Vastutva Gun ensures that we will only do our predefined task. We will not get outside our limits. Okay, it is not possible for us to get outside our limits. Okay, and second thing, what are our powers, our attributes, our qualities? They also never leave us. Okay, so basically, Jeev will do its own work. Pudgal has its own work. Pudgal will do its own work. Okay, Sparsh, Ras, Gandh, Varn, these are the characteristics of Pudgal. So Pudgal will do its own work. Okay, so coming back, summarizing this and how Vastutva Gun helps us getting the freedom is it basically kills the, it says that Jeev cannot be the Karta. Let me give you one example. And I always give this example. If you invest in stock market, okay, you can do all kind of analysis. Okay, you can talk to the company's management, you can read their financial reports, you can read their annual reports, you can do all kind of due diligence possible. Take the data, slice and dice it, do everything with that. Okay, and then decide that, okay, I will invest in this particular company, and then you go ahead and you buy the shares. Okay, and when you buy the shares of that company, now what happens? Getting the profits, is it in your hands? Whoever invests in the stock market will tell you that you can do all kind of analysis, but getting the profit is still based on the market forces. Or you will say, okay, I'm such a perfect analyst that my analysis never goes wrong, and I will definitely get the profit out of that company. Okay, you will get the profit out of that company, but can you tell me before investing how much profit you will get? No, you cannot tell me. So this, then you will realize, okay, I'm not karta. Okay, getting the profit from that investment is basically on the market force. Okay, it is not in my hands. So this way you will realize that basically whatever we try to do, all the kartapana what we have basically has no meaning. Okay, now going ahead, third, Dravyatva Gun. First we saw Astitva Gun, then we saw Vastutva Gun. Third is Dravyatva Gun. जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं. That ensures that Paryay changes constantly. Paryay is something which is outside activity. Okay, Paryay has its own destiny. Okay, so today we are Jeev. Okay, we are in Manushya Paryay, right? We are humans. Okay, we die, our Paryay will change. If you have done good deeds, you will go to heaven. You will become Devgati ka Jeev. Or you have not done good deeds, maybe you go to Narak, you will become Narakgati ka Jeev. Okay, so this is basically the Paryay changing. The soul which you are today will always remain the same. That doesn't die, that doesn't change. Okay, so what are the benefits in knowing Dravyatva Gun? The benefits of knowing Dravyatva Gun is that the change is happening in Paryay. The change doesn't happen in Dravya. One. Second thing is the change is good, right? Today, maybe we are in Paryay, which brings sorrows to us. Okay, maybe somebody is poor, somebody is unhealthy, somebody is sick. So now Dravyatva Gun is saying that Paryay changes constantly. So our sorrows will also change into sansar. Our sorrows will also change into happiness. The sansar which we are in will also change into moksha. Okay, once we realize Dravya Gun Paryay, once we realize basically the way to reach, attain salvation, way to reach moksha, we will put our efforts in getting there, right? So our sorrows will also change into that happiness. And third thing, again, independence. So Paryayas are unconnected. They are independent of each other. They do not interfere with each other. Okay, so the Paryay which has happened yesterday, that Paryay will not is basically unconnected to the Paryay which is happening today. All these Paryayas are different.
Okay, so when these are unconnected, nothing interferes with each other. The result which are getting is also unconnected. The result which we get is basically based on the deeds what we have done in the past and not the effort what we do today. If somebody says, let's see what kind of I'm such a brilliant businessman that I have done this particular activity and got so much profits. Okay, then the profits, that paryay is basically independent of all the hard work which you have put in. Now there will be so many questions in your mind, and what is the meaning? Why do we do all that hard work if that is unconnected with the result? For that, stay tuned with our next sessions. You will get all those answers. Moving ahead, प्रमेयत्व गुण, जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय बनता है. Basically, this ensures that every substance is subject to someone's knowledge. Means that someone is watching and knowing everything all the time. So then what are the benefits of knowing this? The benefits of knowing this, that this proves the existence of Sarvagya Bhagwan. That there is Sarvagya Bhagwan who has Keval Gyan, and due to his Keval Gyan, he basically sees everything at the same time, past, present, and future. Everything he sees at the same time. And then second, like deeper benefit of that is we can also become God. See, we are Jeev Dravya, as Sarvagya Bhagwan, or Mahavir Bhagwan. Let's say Mahavir Bhagwan is also Jeev Dravya. Now Mahavir Bhagwan has Keval Gyan. Now all the Dravya has Gun. So if Kevali Bhagwan has Keval Gyan as a gun, we also have that gun, right? We can also, wo prakat nahi hua hai. It is not into, basically we have not developed it, okay, but we have the capability of develop it. So all the gun which Kevali Bhagwan has, which Sarvagya Bhagwan has, we can also basically get there. And this gives us the independence, that what God has seen in Keval Gyan, what he has seen. Okay, he has seen past, present, and future. Basically, if that would not be fixed, whatever is going to happen, then how can somebody see it before? Right? So if Bhagwan has already seen what is going to take place in future, then how that those things are not going to change, then getting worried about it basically has no meaning, right? Because whatever is going to happen will happen. Okay, and we cannot change it because God has already seen it. So if we cannot change it, somebody has already seen it, then there is we should not get worried about it, right? So this is what Prameyatva Gun tells us. Then what does Aguru Laghutva Gun tells us? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का द्रव्यत्व बना रहे. What does that mean? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो, और द्रव्य में विद्यमान अनंत गुण बिखरकर अलग अलग नहीं हो जाए. So Aguru Laghutva Gun ensures that substance and its attributes will always be together. They will not mix with each other. Let me give you an example to understand this easily. We have mobile phone, right? In our smartphones, there are apps. Okay, there's so many apps. Railway ka app, airport ka app. There will be so many apps. Now, the apps which in our smartphones, they do not mix with each other. If you are going to open Railway ka app, it is not going to take you to the airport ka app. Okay. So first, the apps, the work they are doing their assigned work. Okay, they are not doing something which are not they are not supposed to do. So every app is independent. It does its own work. They do not mix with each other. And then those apps, they do not come out of their smartphone, right? They do not come out of the smartphone. They remain in the smartphone. So smartphone is dravya, so substance. Okay, and those apps are their gun. So the gun doesn't mix with each other and cannot come out of that substance. They always remain with the substance. So basically, the gyan gun which we have, and the ability of that gyan gun to convert into keval gyan, that ability and that quality both lies with us. Okay, now the samyak efforts what we do in that direction basically will ensure that we get the keval gyan.
And what are the benefits of getting understanding Aguru Lagutva Gun? That substances, all the Dravya have their own identity. They do not interfere. Attributes does not leave the substance. They stay together. And again, independence. Okay, that Paryaya are independent and unconnected with past and future. I hope you understand this concept very clearly now, that Paryayas are independent. They are unconnected. Okay. And the last, Pradeshatva Gun. So what Pradeshatva Gun tells us is जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य बना रहता है. The substances will have some or another shape, and the shape, whether it is small or large, is not the reason for any happiness or sorrow. Okay, so what are the benefits of knowing Pradeshatva Gun? That soul has a shape. Okay, our Atma, it has a shape. It is not any mythical substance. Atma takes basically the shape of the body in which it's reside. Okay, so it's not any mythical substance. Our soul cannot be interfered by outside substance. Okay, because it has its own shape, and shape of each substance is independent and natural. Okay, nobody decides that shape. Okay, it's independent. So basically, summarizing what we have learned so far in the 6 Samanya Gun, that we, Jeev, हम अनादि अनंत कायम है. Okay, हम अपना कार्य करते हैं. हमारी जो पर्याय होती है वो पर्याय परिणमनशील होती है. It changes constantly. That's its nature. Okay, let it be. And we are केवल ज्ञान स्वरूप. Okay, and we are हम अनंत शक्तियों के स्वामी हैं, क्योंकि हम जीव हैं. जीव के अंदर अनंत शक्तियां होती हैं, अनंत गुण होते हैं, और हम आकार सहित हैं. So basically, this is kind of the summary of the 6 Samanya Gun, what we have understood. I hope it is clear to us. So let's get back. In the start, how did we start our session? We said that we have lost our freedom. We are constantly living in past or in future. Okay, and that has created some void within us. So one thing should be clear by now, that all the substances, all their attributes, all their characteristics, they are all independent of each other. Okay, they cannot interfere with each other. Okay, and let's so if they cannot interfere with each other, and if they are unconnected to each other, then it will help us realize our own freedom, right? So how? Nobody can interfere in your swabhav. Your Gyan, Darshan, Chetna, Sukh, Virya, all the qualities which you have, nobody can change it. Nobody can interfere with it. The Paryaya, which is happening, the outside activity, it is in its own. It is also independent. It is also unconnected. Your efforts are unconnected with the results. Basically, the results which you get are subject to the karma, basically. So basically, what it means is that all the kind of hard work you can put in, but the results which will be there will be according to the deeds which you have done in the past. Okay, so then your question will be, okay, let me do good deeds now, and these good deeds will result in future good result. Okay, so that's why what we are saying is that if you are going to do Swadhyay, if you are going to understand what our Jinwani has sent, is saying, what our Muniraj has said, what Bhagwan has said, and then you will basically know this, realize this, and internalize this, then basically all the result which you want will be according to what you want, basically, right? So connecting what we have learned in the topic of 6 Samanya Gun, connecting that with another concept, and this is actually not another concept, as I said, it is connected. These are called Char Abhav. Okay, so basically, let's say we are double clicking on that independence, that freedom topic. Okay, we are deep diving into it to understand it in a more clarity. What is the meaning of abhav, char abhav?
Abhav means something which is not with us, okay, which is not ours. That is abhav. Okay. So first is pragbhav. What does प्रागभाव say? प्रागभाव says कि द्रव्य की वर्तमान पर्याय का उसकी पूर्व पर्याय में अभाव. Okay, let's understand with an example that will be clear to us. Curd. Okay, curd is the present form. What was the past form of the curd? Milk. Okay, we made curd out of milk. Okay, so curd is the past form, and curd is the present form, and milk is the past form. Okay, now if I ask you, are are these two things the same? Is the curd and the milk, are these the same thing? No, these are not same thing. And somebody who understands Ayurveda will tell you that now both of these things are basically their nature has become different. Okay, so now applying this example in our lives to understand the pragbhav is that what is happening with us in the present, our present paryay, this is not connected with the past paryay. Remember what we learned in Dravyatva Gun? Dravyatva Gun says that paryay changes constantly, right? So what our present paryay is unconnected to our past paryay. Basically, this is what pragbhav has is saying. Let's take some example. Anjan Chor. Okay, in Anjan Chor, I hope you have read the story of Anjan Chor. What happened to Anjan Chor? He was a thief. Okay, and not just a thief. Basically, he was a criminal. Okay, and that criminal, when he realized his own self, he became Bhagwan. Okay, so now that his present form, basically he's Keval Gyani, he's Bhagwan, he's Sarvagi, he's in Moksha. Okay, and his past form, when he was a criminal, these are different from each other. Okay, so what has happened in the past has happened. Okay, and if you're, will keep the burden of that past in your present, is only put more burden on you and will not help you with anything. Basically, this is what Pragbhav is saying. Second, Pradvansa Bhav. द्रव्य की वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव. What does it mean? Okay, coming back to the same example, that curd. Okay, so the curd is the present form. Now in the future it will become buttermilk. Okay, so the form will change. So that curd today and that buttermilk tomorrow, are these the same thing? No, these are not the same thing. These are different things. Okay, the form has changed. Okay, so what Pradvansa Bhav is telling us is we are in the present, and tomorrow whatever activity will happen in the future, these are unconnected activities. Okay, the paryay which is going to come in the future is not connected to us, connected to the present. So there is no benefit worrying about what lies in the future, right? So Pragbhav and Pradvansa Bhav. Always remember Dravyatva Gun. What Dravyatva Gun has told us? Paryay keeps changing constantly. So your present paryay is detached to your past paryay, and your present paryay is detached to your future paryay. So there is no benefit having that burden on our mind of past and future. Okay, so wouldn't this give you freedom today? Okay, wouldn't this give you the freedom to live in the present the way you want to live? Wouldn't this give you this freedom, right? Okay, third, Anyanya Bhav. What Anyanya Bhav tells us that एक पुद्गल की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल की वर्तमान पर्याय में अभाव. What does it mean? Book, pen, hand, all these are different from each other. Okay, so if these are different from each other, they cannot be the reason of your happiness, of your sorrows. Then you will ask me a question: if somebody throws a stone at me, would it hurt me or not? Because that stone is different and my body is different. Body is also pudgal, stone is also different, pudgal, but the present form of that pudgal is different from the present, it has abhav with the present form of my body. So if that stone hits my body, would I get the pain or not? Right?
So the answer lies that the stone will hurt you if you will if you will realize that sukh dukh ka anubhav in it. If you will realize the अगर आप अनुभव करेंगे कि उसने आपको दुख दिया है तो आपको दुख देगा. Otherwise what happens? There are muniraj who is doing tapasya. Somebody throws stones at the muniraj. Now will you say that that stones have hurt the muniraj? No, because he was not there, he was inside himself. Okay, so he was realizing his soul, and he has detached himself from his body. Somebody who has detached himself from his body, nothing he will not realize, right? Because the hurt, that pain is happening in that body, not in the soul, right? For example, Gurudatta Muniraj. Gurudatta Muniraj attained salvation while he was on fire. Okay, somebody put him on fire, and during that activity, he attained salvation. Now, how can somebody attain salvation? How can somebody get the moksha if they constantly feeling pain in their body, right? What happened with Pandav, Yudhishthir, Bhim, Arjun? Somebody put um, uh, uh, the iron, uh, basically the jewels made up of irons, heated, okay, burning iron. Basically, let's to simplify, burning iron. Somebody put burning iron on their body, and they still got moksha. How? Right? So this basically answers our question that these two are different things. Okay, that stone hurting us, that means that we are not detached to our body yet. Okay. And then last, atyanta bhav, that ek dravya ka dusre dravya mein abhav hai. Okay, so me and my body, they are different dravya. Jeev and Pudgal, you and me, you are different Jeev and I am different Jeev. You and money, you and your money is atyanta bhav. Okay, you and your money is different from each other. Okay, in the lockdown situations, you wanted to go from, let's say, Mumbai to Delhi. How much money you wanted to spend? You could not reach your destination, right? You were trapped. So your money doesn't come, doesn't service you, basically, right? You and your career, they are also detached with each other. You and your family, they all have atyanta bhav, right? So basically, this char abhav tells us that things do not interfere with each other. They are distinct. What has happened in the past is gone. What will happen in the future is out of our control. So we can, and this understanding that we can change something, this is the root cause of our all the problems. We can change something, we can make something better, or we can make something worse. We take care of our child, we earn the money, we get the promotion. These all karta pane ka bhav, we do. This is the root cause of all our problems. And if we realize that we cannot do anything outside, what we can do is basically in our inside. We can basically realize our own swabhav, that we can do, but we cannot do something outside, basically, right? So this was a small group activity. I think in the benefit of time, I will just skip it, but I want you to answer yourself. Okay, that we have established that we are the knower, we are not the doers. Okay, so do we still believe that we can change something? We can create something, we can destroy something? And then you will have to answer that. Then if not, then who drives my car? Who cooks food for me? Who goes to work? Right? So basically, it's kind of an activity post session. Okay, and so now closing our session with the saying in Swahili, Hakuna Matata. What does it mean? That there should not be any worries, right? Because our worries would lead us nowhere. The worries has no meaning to us. And all the worry which we do, things are still out of our control. So then what is the benefit of doing all that worries? Okay, so by this we end our session. And the poll which we had earlier, right? Southern, can we have that poll again? Now I want you to answer. Now, are you worried about your future? I want you to answer. Are you worried about your future?
Huh? Come on, guys. More participation. Still, there are more people who can answer. Still, somebody is saying that sometimes they may get worried. The answer to that is sometimes if you get worried is to understand this concept. Okay, think about this concept again. Whether this can really make me, am I getting worried? Is it genuine? Should I be getting worried? When we are not karta, this is not our swabhav. We cannot do something outside. Then does it really help us getting worried? So we have our result, and earlier we said 50% people are saying that yes, we are worried about future. Right now 0% people are saying they are not worried about future. Instead 80% people are saying they are not worried. Only 20% people are saying that sometimes they are worried about their future. So I hope this session was then meaningful in the sense to realize that getting worried about our past or future has no meaning. We are independent, we have our own freedom, we are unconnected with other things do not interfere with us. Basically that is the summarization of our session. In the next session what you are going to learn is then all these questions, right? Who cooks food for me? Who drives my car? These are the important questions to answer. If you are saying I'm not doer, then who is doing it for that? So I hope in the next session, which will be taken by Shaleen, he will help you answer all these questions. Okay, so thank you. Jai Jinendra. Thank you so much, Gyayak Bhaiya. So basically, Bhaiya just said that here ends our search for happiness in our outside materialistic things, and that our effort to gain things and to accumulate endlessly comes to an end. We are present forever, like soul never dies, and we are being watched. Thank you so much for enlightening us with your knowledge, Gyayak Bhaiya. Now, you also said that everything is free, sab swatantra hai. So I'd like to let you know something. See, do you know that the birth of a baby giraffe is quite an earth-shaking moment? When baby giraffe takes birth, it falls from its mother's womb some 8 feet above the ground, right? And it is so weak. It is just a small kid, and it trembles and it shivers, but it can't stand up on its own. Mama giraffe smooches its child, lowers her neck, smooches its child, and what happens is something incredible. It kicks its child, sending it flying up in the air and going tumbling down on the ground. And when it rests, lays still on the ground, it again kicks it. Why? Why does she do so? Because she knows that if its child doesn't learn to get up on its own and doesn't learn to run on its own, it will be eaten. It will be a prey to lions and leopards in the jungle soon. So she does so that the child can stand on its limbs, and she does that. The child finally stands on its limbs. So it's not just a giraffe story. Factually, we all got to do that for ourselves. No one is gonna lift us. We gotta lift ourselves. This is what Swatantrata says, to focus more on the same. May I please request a seasoned scholar, son of Bade Dada, we all know him, a well-known motivational speaker, Pandit SPG Bharill, Shuddhatma Prakashji Bharill. Yes. ओम नमः सिद्धेभ्यः। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम एसपी भारिल है और मंगलायतन ने जो नया एक प्रोग्राम शुरू किया है, ज़बरदस्त प्रोग्राम है और आप सब इसे सुन रहे हैं। मैं चाहता तो मैं आपसे लाइव बात करता, लेकिन किसी कारण से मेरी व्यस्तता रही और मैं लाइव आपके पास नहीं आ पा रहा हूँ, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्डिंग आपको भेज रहा हूँ। और ये बात मैंने इसलिए कह दी है कि आपको पता तो लग ही जाएगा ये रिकॉर्डिंग है, तो फिर मैं क्यों छिपाऊँ इस बात के लिए कि मैं आपके साथ लाइव नहीं हूँ। आज का मेरा टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है, बहुत क्रिटिकल है और मुझे बहुत पसंद है, और टॉपिक का नाम है कण कण की स्वतंत्रता।
प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, चीज़ें बहुत ज़बरदस्त चल रही हैं और आप सब देख रहे हो कि ये सब कितना आसान हो गया है अब कोविड की वजह से, और लोग कितने कंफर्टेबल हो गए और आप घर पे बैठ के बात समझ रहे हैं। मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूँ, कण कण की स्वतंत्रता, तो शुरुआत करते हैं परतंत्रता से, शुरुआत करते हैं डिपेंडेंसी से, इंडिपेंडेंसी से नहीं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हमको वो डिपेंडेंसी पसंद है? क्या हमको पसंद है कि हम परतंत्र हो जाएं? क्या हमको पसंद है कि मैं किसी के लिए परतंत्र हो जाऊं और कोई मुझ पर परतंत्र हो जाए? मैं किसी पे डिपेंडेंट हो जाऊं, कोई और मुझ पर डिपेंडेंट हो जाए? क्या ये मुझे पसंद है? अगर मुझे ये पसंद नहीं है तो फिर नंबर किस चीज़ का आता है? नंबर आता है स्वतंत्रता का। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? रूल तो एक काम करेगा। मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे कंट्रोल में पूरी दुनिया रहे और मैं किसी के कंट्रोल में नहीं रहूं। तो फिर इसका मतलब ये है कि जो सामने वाला आप है ना भाई साहब, आप रमेश, सुरेश, घनश्याम, जॉन, पीटर, शीला, बिमला, ये भी तो चाहती हैं कि ये सब लोग सबके कंट्रोल में आ जाएं। मतलब आप ये चाहते हो आप मेरे कंट्रोल में आ जाओ, मैं चाहता हूँ मैं आपके कंट्रोल में आ जाऊँ, मतलब मैं आप पे डिपेंडेंट हो जाऊँ, आप मेरे पे डिपेंडेंट हो जाओ। ये तो पॉसिबल है नहीं। मैं क्या चाहता हूँ? सब मेरे कंट्रोल में रहे। तो ये कैसे? रूल तो एक काम करेगा। प्रकृति का नियम, वस्तु का स्वभाव, वस्तु का जो नियम है, वस्तु का जो स्वरूप है, वो तो एक ही काम करेगा, दो चीजें काम नहीं कर सकती हैं। तो फिर कितना अच्छा हो कि सब अपने अपने में स्वतंत्र हो जाएं। अरे स्वतंत्रता की हद तो देखो। मैं एक बात पूछता हूँ कि एक पेड़ है, उस पेड़ में एक सा पानी है, एक सा खाद है, एक सा एनवायरमेंट है, एक सा माहौल है, और उसमें जो ककड़ी लगी वो आधी ककड़ी कड़वी होती है और आधी ककड़ी मीठी होती है। ये स्वतंत्रता तो देखो, कौन किस पर निर्भर है। और वो जो एज है, जहाँ से करवाहट शुरू होती है, जहाँ से मिठास शुरू होती है, वो हमें पता नहीं चलती, लेकिन वो कोई ना कोई जगह तो ऐसी है ना। तो कितनी स्वतंत्रता है, आप कल्पना तो करो। एक आम में आधा खट्टा होता है, आधा मीठा होता है। एक ही पेड़ में, एक ही बीज से, एक ही खाद, एनवायरमेंट, एक ही माहौल, एक सी उसमें सब चीज़ें, दवाइयाँ डल रही हैं, उसके बावजूद भी क्यों? आखिर क्यों? क्या चीज़ है? क्यों फ़र्क है? मैं बहुत संक्षेप में बात करूंगा। वैसे मेरा ये टॉपिक लगभग 3 घंटे का होता है और मैं 3 घंटे में इस चीज़ को कवर करता हूं, लेकिन मैं इसे 15-20 मिनट में कवर करूंगा। यहाँ पर एक क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, एक बच्चा फेल होता है, दूसरे बच्चे के नंबर आते हैं 99% और एक बच्चे के आते हैं 50%। क्यों? टीचर एक है, एक सी चीज़ पढ़ा रहा है, एक सा माहौल है, एक सा एनवायरनमेंट है, फिर ये फ़र्क क्यों है? आप 1 मिनट में कह दो कि सबकी अपनी अपनी योग्यता है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, सबकी अपनी योग्यता है। पर हम भी कितने पागल और मूर्ख हैं, कहीं हम अपनी योग्यता मान लेते हैं और कहीं हम कहते हैं कि सब चीज़ें मेरे कंट्रोल में आ जाएं। कहीं मैं मानता हूँ कि सब अपने अपने हिसाब से चलता रहेगा, और कहीं मैं मानता हूँ नहीं मैं करूँगा। रूल एक काम करेगा, इस बात को याद रखो। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, और यूनिवर्सल ट्रुथ में एक रूल काम करता है, 2 रूल काम नहीं करते। लेकिन जिस बच्चे के 33% मार्क्स आते हैं, वो आरोप लगाने को तैयार हो जाता है, टीचर अच्छा नहीं था, ब्रेंच अच्छी नहीं थी, स्कूल अच्छा नहीं था, वो पढ़ाता अच्छा नहीं था। अरे, और जिसके 99% मार्क्स आते हैं वो आरोप नहीं लगाता। क्या फ़र्क है आखिर? एक आदमी आरोप लगाता है, हम आरोप ढूंढते हैं हम किस पे आरोप लगाएं। अच्छा, आरोप लगाने की कमी तो उस 99% वाले में भी नहीं है। वो क्या कहता है? मैंने पढ़ाई की इसलिए मैं आ गया। फेल वाला कहता है ये नहीं पढ़ा पाया इसलिए नहीं आ पाया। मतलब सोचो तो सही कि कैसी डिपेंडेंसी की बात हम करते हैं, कैसे एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं हम, कैसे एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं हम, जबकि वो ककड़ी आधी कड़वी है, आधी मीठी है, इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। वो आम आधा खट्टा है, आधा मीठा है, इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं तकलीफ किस बात की है कि ये जो कण कण है ना, वस्तु का कण कण, ये स्वतंत्र है और मैंने ये मान रखा है कि परतंत्र है। बस दुख का कारण ये है, मान रखा है नहीं। तकलीफ मानने में है, मुझे मानने को तोड़ना पड़ेगा, मुझे मानने पे चोट करनी पड़ेगी। वस्तु तो जैसी है वैसी है, पर मेरी मान्यता में तकलीफ है ना। तो ठीक कैसे करना है? मान्यता को करना है। मिथ्यात्व तो वस्तु में नहीं है, मिथ्यात्व तो मानने में है। हम कहते हैं उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है, तो मान्यता का नाम मिथ्यात्व है ना। मिथ्यात्व मतलब उल्टा, जो जैसा नहीं उसे वैसा मानना है। तो विश्व की कण कण विश्व का स्वतंत्र है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। मैंने उसे मान रखा डिपेंडेंट।
और ये मेरी मान्यता है, मान रखा है ना, मानना ठीक कर दे। ये वास्तव में ऐसा मानना है जैसे हम बचपन में पढ़ते थे कि माना कि x बराबर 100। जब x बराबर 100 होता नहीं है, माना कि, उसमें लिखा भी होता है माना कि, तो जब वो माना कि x बराबर 100 है तो है थोड़ी। तो हम कहते हैं एक धोबी, मान लो कि एक धोबी 1 घंटे में 100 कपड़े धोता है, तो वो धोबी 10 घंटे में कितने धोएगा? अब किसी धोबी के बाप ने नहीं धोए 100 कपड़े 1 घंटे में, लेकिन मान लो कहते हैं ना। तो हम भी समस्या क्या है कि हम हर चीज को मान ही रहे हैं, वो है नहीं। और हम अगर ये मान लें कि ये मानना है तो ठीक मानने को करना है, और मानने को ठीक कर लिया तो सब काम हो जाएगा। मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि मैं बहुत शॉर्ट में आपसे बात कहना चाहता हूँ, बहुत क्रिस्प तरीके से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैंने इस चीज को समझ लिया कि सब लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें तो काम कैसा हो, तो पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को मैं 2 भागों में डिवाइड करता हूँ। पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को 2 भागों में। 2 भाग कौन से होंगे? एक जीव है, एक अजीब है। अजीब को हम पुद्गल भी कह सकते हैं। तो एक जीव और एक अजीब है। जीव कौन है? जो चेतन है, जो जानता है, देखता है, जिसमें ज्ञान है, मैं हूँ, आप हैं। और अजीब कौन सा? ये पुद्गल, ये पेन है, ये मोबाइल है, माइक है, ये सब अजीब हैं जिसमें जान नहीं है। पत्थर है, टेबल है, कुर्सी है, कार है, ये सब अजीब हैं। मेटेरियलिस्टिक चीज़ें जितनी हैं वो सब अजीब हैं। हम जीव हैं। तो फिर हाथी कौन है? हाथी जीव है कि अजीब है? अब हाथी की हमने बालूत पाठ वाला भाग 1 में पढ़ा होगा आपने। अब इसका डिफरेंशिएट समझ लो कि हाथी की जो आत्मा है वो जीव है और हाथी का जो शरीर है वो अजीब है। मेरे लिए क्या है हाथी? मेरे लिए हाथी तो अजीब है। क्यों? क्योंकि मेरा जो संबंध हाथी से है वो तो उसके शरीर से है, उसकी आत्मा तो मैं जानता नहीं, मैं देखता नहीं। तो मेरे लिए तो हाथी अजीब ही हो गया एक तरह से। वो अपने लिए जीव है पर मेरे लिए अजीब है। मैं मेरे लिए जीव हूं। मेरे लिए मेरी पत्नी जो है ना वो भी अजीब है, क्योंकि पत्नी का जो शरीर है वो अजीब है और मेरा संबंध तो उसके साथ शरीर से है। मैं उसके शरीर को देखता हूँ, मैं शरीर को जानता हूँ, मैं उसकी आत्मा को कहाँ जानता देखता हूँ। तो मेरा संबंध तो है ही नहीं उसकी आत्मा से, उसके जीव से। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया को 2 भागों में अगर हम बांटें तो एक जीव है और एक अजीब है, और उसमें जीव में हूं और मेरे लिए बाकी पूरा विश्व अजीब है। ओहो, मतलब मैं तराजू के एक पल्ले पे मैं अपने आप को रखूं और दूसरे पल्ले पे मैं पूरे विश्व को रख दूं। हाँ, आप में वो ताकत है, आप में वो पावर है, आप में वो शक्ति है। आप समझ लो कि एक पल्ले में हम और दूसरे पल्ले में पूरा विश्व, पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड। तो समझ लो कि मैं जीव और बाकी सब मेरे लिए अजीब। अब इसमें कोई शंका है? नहीं है, हो ही नहीं सकती। क्या शंका होगी? कितनी स्पष्ट बात है, कितनी साफ बात है। तो जब मैं जीव, बाकी सब मेरे लिए अजीब, जब ये बात नक्की हो गई है और ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, तो 2 चीजें भिन्न भिन्न है ना। तो ये नक्की करते हैं कि जीव का संबंध अजीब से नहीं हो सकता, अजीब का जीव से नहीं हो सकता। 2 अलग अलग आइडेंटिटी हो गई ना। तो फिर मेरा संबंध और मेरा कंट्रोल, मेरी डिपेंडेंसी अजीब पे कैसे हो सकती है? वो तो अलग है और मैं अलग हूं। नहीं हो सकती। जब नहीं हो सकती तो मेरे अलावा पूरा विश्व, पूरी दुनिया अजीब है, तो मेरा जो कंट्रोल है वो किसी और पे हो ही नहीं सकता। मेरा कंट्रोल मेरे अलावा किसी और पे नहीं हो सकता। बाकी सब इंडिपेंडेंट हैं, मैं भी इंडिपेंडेंट हूं। तो मेरी डिपेंडेंसी किसी और से नहीं हो सकती और किसी और की डिपेंडेंसी मेरे पे नहीं हो सकती, ना मेटेरियलिस्टिक चीजों से, ना दूसरे जीव से। इतना समझ लो। कैसे नहीं हो सकती? हम इसके बारे में थोड़ी और बात करते हैं कि ये जो पेड़ है ना, पेड़ क्या है? अब जीव है क्या? जीव है कि साहब जीव है। अच्छा रहा वो बेचारा जगदीश बसु जो वैज्ञानिक था, उसने सिद्ध कर दिया कि पेड़ जीव है, वरना हम तो मानने को तैयार नहीं थे। जिनवाणी में आया था, हमें वो सुनने को तैयार नहीं है। जिनवाणी की बात हम मानने को तैयार नहीं है, वैज्ञानिक ने कह दी, हमने मान ली। तो पेड़ भी जीव है ना, और हम उसको मानने को तैयार नहीं है। ये समझ लो कि पेड़ भी जीव है, पर मेरे लिए तो अजीब ही है। जो परिभाषा हमने हाथी के लिए, पत्नी, बच्चों के लिए समझी, वही परिभाषा यहाँ पर है। तो अब जब 2 आइडेंटिटी अलग हो गई, एक जीव और एक अजीब, तो एक जीव का हस्तक्षेप अजीब में कैसे हो सकता है और अजीब का हस्तक्षेप जीव में कैसे हो सकता है? चम्मत पर्याय के संबंध में एक बात बहुत बढ़िया आती है कि ये पर्याय पलटती हैं
प्रति समय पलटती है, पर इतनी नहीं पलटती है कि जीव अजीब हो जाए और अजीब जीव हो जाए। सोचो, परिवर्तन है, बदलाव है, पर इतना नहीं है। जब इतना नहीं है बदलाव, तो फिर परतंत्रता भी कैसे हो सकती है? वो परतंत्रता पॉसिबल नहीं है। मैं कहता हूँ कि ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया ना कि हम प्यार किससे कर रहे हैं। ये जो शरीर है, इसके अंदर जो आत्मा है वो अलग है और ये शरीर अलग है। जब कोई व्यक्ति मुर्दा मर जाता है, कोई व्यक्ति मर जाता है तो मुर्दा हो जाता है ना, मतलब उसके अंदर की आत्मा चली गई और ये शरीर तो रह गया, जैसा अभी वैसा भी है, लेकिन फिर तुम उसे मुर्दा कहते हो, जलाते हो, क्योंकि इसमें जो चीज़ थी वो चली गई। तो ये बहुत स्पष्ट हो गया कि मेरा शरीर अजीब है और मेरी आत्मा जीव है। तो जब ये बात स्पष्ट है तो जीव का जीव से संबंध कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। जब संबंध नहीं हो सकता और मैं संबंध मानता हूं, बस ये मेरी भूल है, ये मेरी मान्यता है, ये मैं मान रहा हूं और ये मैं गलत मान रहा हूं। जीव का जीव से संबंध हो नहीं सकता, अजीब का जीव से संबंध नहीं हो सकता। और इस बात को अगर मैं स्वीकार कर लिया तो समझ लिया हमारा कल्याण तो हो गया और वस्तु स्वरूप हमने समझ लिया। ये एक दूसरे पे ना निर्भर हो सकते हैं, ना एक दूसरे के रूप हो सकते हैं। तो ये जब भिन्न हैं पूरी सृष्टि और मैं पूरा भिन्न हूं, तो फिर मैं किससे तुलना कर रहा हूं? ओ माय गॉड, मैं तुलना किससे कर रहा हूं? अजीब से। कौन तुलना कर रहा है? जीव। मतलब जीव अजीब से तुलना कर रहा है, तुलना नहीं कर रहा है। दुर्भाग्य तो ये है कि जीव कमबख्त अजीब के संयोग से अपने को बड़ा मानता है या छोटा मानता है। आपने घर में मछली खरीद ली 50 लाख रुपए की, आप चौड़े हो जाते हो, आपकी टांगे चौड़ी हो जाती, सीना बाहर निकल आता है। किसके कारण हुए? अजीब के कारण, मेटलिस्टिक चीजों के कारण। और जबकि तू कौन है कि एक तराजू पे तू और दूसरा तराजू पे पूरी दुनिया, लेकिन मैं उस मछली से अपने आप को बड़ा मान रहा हूं। 1 करोड़ रुपए मेरे घर में रखे हैं, वो तो अजीब है ना, और पुद्गल है ना, उस 1 करोड़ के कारण मैं अपने आप को बड़ा मान रहा हूं। मैं तुलना कर रहा हूं, मैं उससे अपने आप को बड़ा मान रहा हूं, मैं उससे अपने आप को छोटा मान रहा हूं, जबकि दोनों में जातिगत भिन्नता है। आप सोचो तो सही, आप कभी किसी कुत्ते के कारण आपको बड़ा मानते हो या कुत्ता अपने आप को बड़ा मानता है आपके कारण? अभी अलग बात है कि आजकल कुत्ते रखना फैशन में आ गया और फिर कोई कहता मेरे पास तो जर्मन शेफर्ड है, तो वो बड़ा मानने लगता। अब क्या करें, लोगों की प्रवृत्तियां तो ऐसी होती चली जा रही हैं। लेकिन गली का कुत्ता आप रख लो तो आप नहीं मानते हो फिर अपने आप को बड़ा। तो मतलब सोचो तो सही, हम किसके कारण किसको बड़ा मान रहे हैं, हम किसके कारण किससे तुलना कर रहे हैं। मैं क्रोध कर रहा हूं तो किस पे कर रहा हूं? वो भी अजीब पे ही कर रहा हूं। सुनो, अजीब पे नहीं, अगर पत्नी पे क्रोध आ रहा ना बाबू, तो अभी हमने नक्की किया था पत्नी भी तुम्हारे लिए अजीब है। तुम पत्नी की आत्मा पे थोड़ी क्रोध कर रहे हो, उसी शरीर की क्रिया पे या उसकी जबान से उसने जो बोला वो जबान तो अजीब है, उस पर क्रोध कर रहे हो। तुम मान कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, मान कर रहे हो, मायाचारी कर रहे हो, लोभ कर रहे हो, ये सब अजीब पे कर रहे हो, अजीब के कारण कर रहे हो, जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है। और मैं उस अजीब के कारण अपने आप को कसायों की प्रवृत्ति में संलग्न कर रहा हूं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। सोचो, सच बताऊं, मैं सब ड्रामा कर रहा हूं, एक लाइन में कहूं तो। और मैं ड्रामा इसलिए कर रहा हूं कि जो मेरा नहीं मैं उसे अपना मान रहा हूं, तो ये वास्तव में ड्रामा है। सच में ड्रामा में क्या होता है, जब वो रामायण चल रही होती है तो रमेश सीता बनता है और सुरेश राम बनता है। तो जो जो नहीं है वो बनता है, तो वो ड्रामा ही तो है। और यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी जिंदगी में ड्रामा। और जिंदगी नहीं है ना, अनादि काल से लगातार आज तक वो ड्रामा कर रहा हूँ। और जो भगवान बन गए उनने वो ड्रामा बंद कर दिया, उनने वो सच जान लिया। और जैसी रामलीला खत्म होती है और जब वो अपना साड़ी का पल्लू हटाती है, लिपस्टिक हटाती है, तो वो रमेश निकल आता है। तब पता चलता है अरे यार ये तो रमेश है, तो सीता बना हुआ था। तब असलियत उसकी बाहर निकलती है। हमें वो असलियत समझनी होगी, हमें वो मानना बंद करना होगा, तो हम समझ जाएंगे कौन किस पर निर्भर है। जरा सोच तो लो। ये जो बोलने की क्रिया है ना, ये अकेली एक क्रिया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक क्रिया अकेली बोलने की, वो बोलने की क्रिया में 4 चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं 4 चीजें? एक तो इच्छा होती है बोलने की, एक होता है ओंठों का हिलना, एक है भाषा का निकलना, और एक है इस बात का ज्ञान होना कि मैंने बोला।
मैंने कहा मैं आ रहा हूं, तो ये जो मैंने बोला मैं आ रहा हूं, इसमें 4 चीजें हो गई। मेरा बोलने की इच्छा हुई, ये मेरे ओंठों का हिलना हुआ, ये भाषा का निकलना हुआ, और ये मैं आ रहा हूं इस बात का ज्ञान हुआ। ये 4 चीजें हुई ना, तो ये 4 चीजें भी अपने आप में डिपेंडेंट नहीं है, ये निर्भर नहीं है, ये भी एक दूसरे, ये स्वतंत्र क्रियाएं हैं। कितनी बार ऐसा होता है मेरी बोलने की इच्छा होती है, मैं नहीं बोल पाता हूँ। रात को 2 बजे आप घर में घुसे, पिताजी डंडा लेके बैठे हैं, आपकी बोलने की इच्छा हो रही है और आपकी घिघी बन गई, चुप हो गए। इच्छा और बोलने का संबंध रहा कि नहीं रहा? नहीं रहा। बोलने की क्रिया अलग है और बोलने की इच्छा अलग है। कई बार आपकी इच्छा नहीं होती बोलने की, रात को सोते सोते बड़बड़ाने लगते हैं, और सुबह पत्नी कहती है यार तुम तो बोल रहे थे। अरे मैं कहाँ बोल रहा था, मुझे ज्ञान भी नहीं हुआ। ज्ञान भिन्न हो गया, क्रिया भिन्न हो गई, इच्छा भिन्न हो गई। अगर सब एक होते तो मुझे क्यों नहीं पता होता? सोचो तो सही जरा, मेरी खुद की क्रिया इतनी भिन्न भिन्न है, मेरी क्रियाएं आपस में, मेरी 2 क्रियाएं नहीं मिलती हैं, और मैं दूसरे की क्रियाओं पे अपना कंट्रोल करने की बात सोचता हूं। कैसे पॉसिबल है? जरा कल्पना तो करो। संभव नहीं है, बिल्कुल असंभव है। मैं कितने बार ऐसा होता है कि पागल बोलता रहता है और उसे पता नहीं होता मैं क्या बोल रहा हूं। तो वो जो ज्ञान होना, ओंठों का हिलना और बोलना कितना भिन्न भिन्न हो गया। तो कितनी क्रियाओं में जो भिन्नता है। कितने बार ऐसा होता है कि पत्नी बोलती रहती है, पति कहता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पति कुछ और समझ जाता है, पत्नी कुछ और बोल जाती है। अब पत्नी जो बोल रही है वो पत्नी नहीं समझता है। जब लड़ाई हो जाती है 3 दिन बाद समझ में आता है मैं तो ये कह नहीं रही थी, वो कहता मैं तो ये समझा था। तो अब सोचो जरा, तो कितनी क्रियाएं भिन्न भिन्न हो गई, और हम समझ रहे हैं कि सब कुछ एक है। ये बहुत बड़ा विषय है, लंबा चौड़ा विषय है, पर मैं इसे बहुत आगे तक लेके नहीं जाऊंगा। ये लगभग 3 घंटे का सब्जेक्ट है मेरे पास, और मैं इस 10 लक्षण में प्रवचन करने वाला हूँ डिजिटली। लिंक आपको मिल जाएंगे, उसमें मैं ज़रूर ये 2-3 दिन में इस टॉपिक को मैं कवर करूँगा। और बहुत सारे ऐसे जैन तत्व ज्ञान के मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ, कर्मबद्ध पर्याय जैसे टॉपिक, और भी क्या भगवान जगत का करता है, वो कुछ कर सकता है क्या, और मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ, वास्तव में धर्म क्या होता है, दुख का कारण क्या है, इन भावों का फल क्या होगा। ऐसे जो मार्मिक टॉपिक और सब्जेक्ट हैं उनकी मैं बात करने वाला हूँ। और मैं सुबह करूँगा अमेरिका के लिए, शाम को करूँगा हिंदुस्तान में, 2-3 लोगों के लिए अलग अलग आपसे बात करेंगे, मिलेंगे। आप भी इस क्षण में बिल्कुल अलर्ट रहिए, कहीं ना कहीं जरूर कनेक्ट रहिए। आप सीख पाएंगे कि और जैन दर्शन के मूल सिद्धांत कैसे हैं, इन सिद्धांतों की बारीकी कैसी है, हम कैसे इनको समझ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं। हम मिलेंगे फिर आपसे बहुत जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच पंडित जी फॉर एनलाइटनिंग अस विद योर नॉलेज। आपने बताया कि जीव अजीव नहीं है, अजीव जीव नहीं है, किसी द्रव्य का किसी अन्य द्रव्य में हस्तक्षेप नहीं है, फिर हम तुलना किससे कर रहे हैं, हम अपने आप की, हम दुखी किस बात को लेकर हो रहे हैं, ये आपने बताया। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती, कोई किसी को परिणमित कराना चाहे वह भाव तो मिथ्यात्व ही है। ऐसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक की कुछ पंक्तियां इस संदर्भ में सुनी। अब हमें पता है कि द्रव्य जो है, हमारा द्रव्य तो स्वतंत्र ही है, जो परतंत्रता है वह तो हमारी पर्याय में है, और पर्याय में भी सचमुच परतंत्रता नहीं है, परतंत्रता हमारी मान्यता में है। यदि हम अपनी मान्यता सुधारेंगे तो वो परतंत्रता भी चली जाएगी और स्वतंत्र होने का मार्ग प्रशस्त होगा। इस प्रकार हमने पंडित जी का भाषण सुना। अब यदि आप में से किसी को कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। Jayak bhaiya will be answering them. So I have one question from YouTube. I will answer that first. Yeah. These things are really amazing, but hard to accept at deeper inner level. So I cannot convince myself that I can make these changes.
So these things are really amazing to understand, but hard to accept. Now, if you remember when we started session 1, before starting session 1, Anubhav has showed you some video, right? That every time we do the same kind of mistakes, and again and again we are doing that mistakes, and we will because we do not look around, etc. I hope you remember seeing that video. So putting that video in the context and telling you that now we know, okay, we know that what we are doing is wrong, and not doing what we are thinking, right? Our way of thinking is wrong, and we need to correct it. Now this see, this takes into practice, right? Samaysar fourth gatha, if you remember, है सर्वश्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा. सो अनादि से जो हमने किया है, जो हमने समझा है, वो करना आसान होता है, और ये नई चीज जब हम सोच रहे हैं और समझ रहे हैं और इसको प्रैक्टिस में लाने के प्रयत्न कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है. सो आई थिंक जस्ट again and again realizing it in our mind will help us. If you have any other questions, we can go on, but I think it will be very late at East Coast right now, so we can take offline also. Do we have any other questions? You can put that in chat as well. Yeah, you can put that in chat, or you can raise your hand. Fine. So yeah, that's it, fine. I guess. Yeah. Okay. First of all, before we do Janmani Stuti, Sham ko we have the session will continue. Fourth session hai Sham ko, and Indian Standard Timing 8:10 पे join होना है, and USA and Canadian and timings आपको बता दिए जाएंगे. And the speakers we have are speaker Manglarthi Shaleen Bhaiya and Pandit Shri Niteshji Shah from Dubai as subject experts. So do join. These sessions will be beautiful. Yes. Now I'd request Annie Jain for Janmani Stuti to come for Janmani Stuti. धर्म सत्य चाहते बहुबड़ शिवानंद फलदानी. धर्म सत्य चाहते बहुबड़ शिवानंद फलदानी. मेघ घटा सम श्री जिनवाणी. मेघ घटा सम श्री जिनवाणी. मोहन धूल तभी सब आते क्रोधान सब जानी. मोहन धूल तभी सब आते क्रोधान सब जानी. मेघ घटा सम श्री जिनवाणी. मेघ घटा सम श्री जिनवाणी. भाग चंद पुत झलके की लगी हर चित ज्ञानी. भाग चंद पुत झलके की कुल लगी हर चित ज्ञानी. मेघ घटा सम श्री जिनवाणी. मेघ घटा सम श्री जिनवाणी. थैंक यू. रामायण भक्ति, पंचगुरु भक्ति, राजा नागेंद्र और सुरेंद्र जिन पर 3 छत्र धारण कराते हैं,
तथा जो पंच कल्याणकों के सुख समूह को प्राप्त हैं, वे जिनेंद्र हमारे लिए उत्कृष्ट मंगल स्वरूप अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत बल और उत्कृष्ट ध्यान को देवें। जिन्होंने ध्यान रूपी अग्नि बाणों से उत्पन्न मजबूत जन्म जरा और मरण रूपी 3 नगरों को जला डाला तथा जिन्होंने शाश्वत मोक्ष स्थान प्राप्त कर लिया, वे सिद्ध भगवान मुझे उत्तम ज्ञान प्रदान करें। जो 5 आचार रूपी 5 अग्नियों का साधन करते हैं, द्वादशांग रूपी समुद्र में अवगाह करते हैं तथा जो आशाओं से रहित मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, ऐसे आचार्य परमेष्ठी मेरे लिए सदा महती मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्रदान करें, जिसमें तीक्ष्ण विकराल वरण वाला पाप रूपी सिंह निवास करता है। ऐसे घोर संसार रूप भयंकर वन में मार्ग भूले हुए जीवों को जो मार्ग दिखलाते हैं, उन उपाध्याय परमेष्ठियों की मैं सदा वंदना करता हूँ। उग्र तपस्शरण करने से जिनका शरीर क्षीण हो गया है, जो उत्तम धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को प्राप्त हैं तथा तप रूपी लक्ष्मी के द्वारा जो अत्यंत आलिंगित हैं, वे साधु परमेष्ठी मुझे मोक्ष मार्ग के दर्शक हों। मैं इस स्रोत के द्वारा पंच गुरुओं, पंच परमेष्ठियों की वंदना करता हूँ। यह अनंत संसार रूपी सघन वेल को काट डालता है, उत्तम जनों के द्वारा मान्य मोक्ष के सुखों को प्राप्त कराता है तथा कर्म रूपी ईंधन के समूह को जला डालता है। अरुहा सिद्धाइरिया वज्झाया साहु पंच परमेठी यान रमुक्कारा भवे भवे मम सुहम दितु। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 5 परमेष्ठी हैं। इनके लिए किए गए नमस्कार मुझे भव भव में सुख देवें। इच्छामि भन्ते पंच महागुरु भक्ति काउत्सगो कौ तस्सालोचेयम। 8 महापाणिहेर संजुत्ताड़म अरहंताड़म 8 गुण संपन्नाड़म उड्डलोय मध्ययम्मि पैठ्याणम सिद्धाड़म 8 पवैण माऊ संजुत्ताड़म आयरियाड़म आयारादि सुदृढ़ाणो विदेशियाणम उवज्झायाणम त्रियण गुणपाल रणयाणम सव्वसाहुणम ऋच्चकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुःखखौ कम्मखौ बोहिलाहो सुगै गमनम समाहि मरणम जन गुण संपत्ति हो मध्यम। हे भगवान, मैंने पंच महागुरु भक्ति संबंधी कायोत्सर्ग किया है, उसकी आलोचना करता हूँ। 8 प्रातिहार्यों से सहित अरहंत, 8 गुणों से संपन्न तथा ऊर्ध्वलोक के मस्तक पर स्थित सिद्ध, 8 प्रवचन मातृका से संयुक्त आचार्य, आचारांग आदि श्रुत ज्ञान का उपदेश करने वाले उपाध्याय और रत्नत्रय रूपी गुणों के पालन करने में तत्पर सर्व साधुओं की मैं नित्य काल अर्चा करता हूँ, पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। इसके फल स्वरूप मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो और जिनेंद्र भगवान के गुणों की संप्राप्ति हो। जिनेंद्र भगवान के गुणों की संप्राप्ति हो। जिनेंद्र भगवान के गुणों की संप्राप्ति हो। Session 4 and 5 will be live at 11 a.m. ETD. 16.